Hello friends, myself Ashok Bagda from Dr. Subhash Technical Campus, and in today's lecture we are going to discuss part 2 of a group technology. Okay, so let us start. So topic discussed in part 1. So in a part 1 of group technology we have discussed about what is group technology. So we know that in a group technology it is a manufacturing philosophy in which we have to group parts into a family. Okay, then we have already discussed about production system. So we know that we have discussed about three types of production system: batch production, mass production, and job production system. Then another topic that we have discussed is design attributes. So when we are grouping the parts into a family, then we know about design attributes. For example, it's material, measure dimension, minor dimension, tolerance, surface finishing, length to diameter ratio. These are the design attributes. Then we have already discussed about manufacturing attributes. For example, measure, process of manufacturing, surface treatment, operation sequence, production time, batch quality, production rate, okay, and cutting tool. These are the some manufacturing attributes. So these design and manufacturing attributes we consider in a coding, or we consider in a when we are going to make a part family. Then we have already discussed about methods of grouping parts into family. In this topic we have discussed about visual inspection method, okay, production flow analysis, and part classification and coding system. Okay, out of these three we have already discussed about visual inspection method. Okay, so visual inspection method that we have already discussed, and next topic is a OPIDS classification and coding system, and this OPIDS classification and coding system we will discuss in this lecture. Okay, so let us discuss about OPIDS classification and coding system. So OPIDS classification and coding system, this system was developed by H. OPIDS of the University of Essen in Germany. So the scientist named OPIDS has developed this coding system. Now this coding system, the OPIDS coding system, consists 9 codes, okay, 9 digits. OPIDS coding system use the following digit. Okay, so there are total 9 digits, 1, 2, 3, 4 up to 9, and out of this 9 digit, first 5 digit is known as a form code. So form code 1, 2, 3, 4 and 5, the first 5 digit are known as a form code for a design attributes, part geometry and features relevant to the part design. That means in the first 5 digit we will cover the design attributes, okay, and next 4 digit, that means 6, 7, 8 and 9 are known as a supplementary code. Okay, so supplementary code is for the manufacturing attributes. Now we know that what is the design attributes and what will be the manufacturing attributes. So first 5 digit will concern about design attributes, and next 4 digit, that means 6, 7, 8 and 9 will concern about manufacturing attributes, and sometimes another 4 and the basic code is extended up to more 4 digit, okay, is extended up to more 4 digit, and this the extra 4 digit A, B, C, D are referred to as a secondary code and are intended to identify the production operation type and sequence. So this code refers production operation types and refer, okay, production operation types and sequence. So this code is related with production operation types and sequence. So now we have clear idea about OPIDS coding system. OPIDS coding system consists total 9 digit, and out of this 9 digit, first 5 digit is a form code which represent design attributes. The next 4 digit, that means next 4 digit represent manufacturing attributes, and sometimes we add another 4 digit
and that is known as a secondary code. We denote as a capital A, B, C, D for the production operation type and sequence of production processes and production sequences. Okay, so now let us see. So here the first 9 digits are represented. Okay, so first digit is a part class. So you can assign a first digit in a number of 0 to 9. Okay, so first digit you can select 0, 1, 2, 3 or up to 9. But how to select a 0 or 1 or 9, it is depends on this table. So here if our part is rotational part, then we have to select 0 to, if our part is rotational then we have to select 0 to 5, and if our part is non-rotational then we can select 6, 7, 8 and 9. Suppose we are coding a component and this component is in the form of cylindrical shape, then we can say that cylindrical shape it is a rotational part. Okay, so we can select as digit, first digit is 0, 1, 2, 3, 4 or 5, and suppose there is one square round a square bar. Suppose if we have a square bar type part, then we can say that square bar type part is not a cylindrical, that means non-rotational part. So we have to select 6, 7, 8 or 9. Now how to select 1 to 5 or 6, 7, 8, 9? It is depends on L upon D ratio or sometimes A by B ratio or A by C ratio. So here L is the length of part, D is the diameter of part. If our part is cylindrical, then L is the length of part and D is the diameter. So we have to calculate L upon D, and if L upon D is less than or equal to 0.5, then we have to select 0. If L upon D is between 0.5 to 3, then we have to select 1. Similarly, if L upon D is greater than 3, then we have to select 2. Okay, and if L upon D is less than or equal to 2 with some deviation, then 3. Okay, similarly, L upon D is greater than 2 with some deviation, then 4. And if some special cases, then we have to select 5. And here A is the length, B is a height and C is a width. If our part is a prismatic part, then A is the length of part, B is the height of part and C is the width of part. Then we have to select, we have to calculate this ratio A by B and A by C, and according to the final value we have to select some scale. Suppose if we consider a square, if we consider a rectangular bar, and the rectangular bar having some length L, having some length is A and width is suppose C. So if we divided by A by C, then if we get answer greater than or equal to 4 and A by B we get answer less than or equal to 3, then we have to select a code 6. Okay, so in this way we have to assign first digit. Now one thing you have to clear in mind, that the first digit may be a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 8 or a 9. Okay, out of this 10 digit you have to select any one digit. Now second digit is depends on the main shape. Okay, so main shape, if external shape element, then we have to select. So 2 digit, second digit is depends on external shape element. So suppose our cylindrical element, and we know that cylindrical element is made by a turning process. Okay, suppose main shape is a prismatic shape. Okay, so second digit is depends on the main shape of element, that we will see later on. Second digit will depends on the shape of main shape of element. Third digit is depends on rotational machining. Rotational machining means turning. Okay, turning or a grinding. So if internal shape element, if a rotational machining with internal shape element, that means suppose there is a one shaft and shaft having some through hole, inner through hole, then we can say that it is inner shape element. Rotational machining and main bore and rotational machining. So we will also discuss about this digit 3 in a later on. Okay, then next digit is a 4 digit. So 4 digit is a plane surface machining. Now plane surface machining means when you are performing milling operation. Suppose your part is a prismatic part, for example such kind of part. Okay,
if your part is prismatic like this, suppose your part is prismatic part, okay, such type of parts, then we have to perform a milling operation. Okay, so we cannot perform a grinding operation, or we cannot perform a turning operation, then we have to perform milling operation, and such kind of operation is known as a plane surface machining. So in a plane surface machining, according to the plane surface machining, we have to assign digit 4. The next one is a digit 5. So digit 5, it is additional hole, teeth and forming. So if a component having some additional hole, teeth, okay, and threads, then we have to assign digit 5. So digit 6 is depends on the dimension, digit 7 is depends on material, digit 8 is depends on original shape of raw material, and digit 9 is depends on accuracy. Now let us see this digit 2, 3, 4 and 5 in a detail. So here digit 1 to 5 for rotational parts in Opitz system is given. So we have already discussed about digit 1. So digit 1 is depends on rotational parts or non-rotational parts, and also it is depends on length to the diameter ratio. Second digit, so if we see the second digit, so second digit is the external shape. Second digit is external shape or external shape element. Okay, now the smooth or no shape element, okay, then we have to assign 0. Second case, step 1 end or smooth, then we have to assign 1, 2, 3, either 1, 2 or 3. Both end step, then we have to assign 4, 5, 6. And functional cone, operating threads and others, then we have to assign 6, 7, 9. Same way digit 3 is also depends on internal shape. So here external shape, here internal shape. In internal shape, if no hole or no breakthrough, then we have to assign 0. Smooth or step to one end, if there is only one end having step or a smooth, then we have to assign 1, 2, 3. If both ends step, then we have to assign 4, 5, 6. Functional cone, operating threads and others, then we have to assign 6, 7, 8. Similarly, digit 4 is depends on plane surface machining. So if no surface machining, then we have to assign 0. Surface plane and or curved in one dimensional external, then we have to assign 1. Okay, similarly we have to assign the various codes. Okay, similarly surface plane and curved in one direction, then we have to assign 1. External plane surface related by graduation around the circle, then we have to assign digit 2. External groove or a slot, then we have to assign digit 3. External spline, then we have to assign digit 4. External plane surface and or slot external spline, then we have to assign digit 5. Internal plane surface or a slot, then we have to assign digit 6. Internal spline, then we have to assign digit 7. Internal and external polygon, groove and or a slot, then we have to assign digit 8. And any others, then we have to assign digit 9. Now let us see digit 5. So digit 5 is an auxiliary hole and gear teeth. So if our component having some auxiliary holes, that means a hole other than axial through hole. So we consider holes other than axial through hole are auxiliary holes. So if our component having some auxiliary holes and gear teeth, then we have to assign digit 5 according to this table. So first digit is 0. So if no auxiliary holes, so if our parts having no holes, no auxiliary holes or a threads or a gear teeth, then we have to assign 0. If a axial not on pitch circle dimension, if a hole is there but not a axial not on a pitch circle diameter of cylindrical part, then we have to assign digit 1. Axial on pitch circle diameter, then we have to assign digit 2. Radial not on pitch circle diameter, if no gear teeth, then we have to assign digit 1 to 5. Okay, so axial and or a radial
or other dimension, in other direction, if there is a hole in axial direction or in a radial direction or maybe in other direction, then we have to assign digit phi. Now with gear teeth, now if a component having some gear teeth, okay, now if these gear teeth are in a spur gear teeth, then we have to assign 6. If bevel gear teeth, then we have to assign 7. If other gear teeth, then we have to assign 8, and any others, then we have to assign a 9. So now we have clear idea how to assign digit 1, digit 2, digit 3, digit 4 and digit 5. So digit 1 to 5, it is a firm code, and digit 6 to 9, it is known as a secondary code. Okay, so digit 1 to 5 is known as a firm code, and digit 6 to 9 is known as a supplementary code. And sometimes designer or an engineer will apply another secondary code. This secondary code refers to A, B, C and D, and this will represent the production operation and production sequence, okay, or a process sequence. Okay, so now we have clear idea. Form codes represent design attributes, and we know that design attributes, for example, dimensions, shape, okay, then we can say that part geometry, material, length to diameter ratio, these are the some design attributes. Another 4 codes 6, 7, 8, 9 will represent manufacturing attributes, for example, machining processes, cutting tools, operation sequence, production time, okay. And sometimes we also add another secondary codes A, B, C and D. Now let us see one example. Based on this OPID's classification and coding system. So now we have clear idea about OPID's classification and coding system. We know that this OPID's classification and coding system is used in a group technology to form a part families. Now how it will useful in a part family? So suppose in our industry there is a 1000 parts we produce, okay, 1000 parts we produce, then we have to assign all 1000 parts to a code by using this coding system. okay, मैं आपको अलग तरीके से समझाता हूँ कि सपोज हमारे पास हमारी इंडस्ट्री में 1000 पार्ट्स हम प्रोड्यूस करते हैं, ओके, तो इस 1000 पार्ट्स को हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कोड तैयार करेंगे, ठीक, जो 1000 पार्ट्स है हमारे पास, उसके लिए हम क्या तैयार करेंगे, कोड तैयार करेंगे, और कोड तैयार करने के लिए हम ये टेबल रिफर करेंगे, ओके। और जब हमारा कोड प्रिपेयर हो जाएगा तो क्या होगा कि सपोज इस 1000 पार्ट्स हमारे हैं, वो 1000 पार्ट्स में से हमने सपोज 50 कोड असाइन किए, ओके, 50 कोड हुए, तो जो सेम कोड वाले जो पार्ट्स होंगे, सेम कोड जिन पार्ट को हम असाइन किए होंगे, वो सभी हम एक ग्रुप में रखेंगे, और वो ग्रुप क्या कहलाएगा, हमारे लिए पार्ट फैमिली हो जाएगा। ओके, सो हमको कोड असाइन करने हैं सभी पार्ट्स को, और कोड असाइन करने के बाद जिन पार्ट्स का कोड सेम आता है वो सभी पार्ट्स एक ग्रुप में आ जाएंगे। ओके, सो जो ग्रुप है वो ग्रुप क्या कहलाएगा, पार्ट फैमिली कहलाएगा। सो इसीलिए सपोज हमने 50 ग्रुप बनाए तो हमने कितनी फैमिली क्रिएट की, 50 पार्ट फैमिली हमने क्रिएट की। ओके, एंड अब जो हमारी पार्ट फैमिली है उसके बेस पे हम क्या करेंगे, हम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्रिपेयर करेंगे। ओके, देन वी उसके बेस पे हम सेल मैन्युफैक्चरिंग तैयार करेंगे, और वो जो सेल मैन्युफैक्चरिंग है उसे अप्लाई करने के बाद हमें बहुत बेनिफिट होगा, जैसे प्रोडक्शन टाइम डिक्रीज़ होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ओके, लीड टाइम डिक्रीज होगा। ओके, सो वी विल डिस्कस लेटर ऑन। सो आई थिंक आपको अब क्लियर आइडिया हो गया होगा कि क्या है ओपिड्स क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग सिस्टम। नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल। ये एग्जांपल को देखने के बाद हमारा आइडिया और क्लियर होगा। सो हियर वी कंसिडर वन पार्ट, सो दिस इज अवर पार्ट्स। सो नाउ जो ये हमारा पार्ट्स है, इफ वी सी अ पार्ट्स, then we can say that this is the axis of part, okay, and this part is symmetric about this axis,
and it is a circular cylindrical type part, so we can say that this part is comes under the category of rotational part. ओके हम क्या कह सकते हैं, ये पार्ट रोटेशनल पार्ट है. ओके तो फर्स्ट आइडिया हमारा क्लियर हो गया, हमारा पार्ट्स कैसा है, रोटेशनल पार्ट्स है. सेकंड थिंग्स आप देखिए, तो ये जो सिलेंडर है उसमें लेफ्ट साइड पे भी स्टेप है, डायामीटर रिड्यूस हो रहा है, और राइट साइड में भी डायामीटर रिड्यूस हो रहा है. तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमारा पार्ट्स क्या है, स्टेप टू द बोथ एंड. ओके हमारा पार्ट्स कैसा है, तो बोथ साइड पे स्टेप है. ओके सो सेकंड थिंग्स वी हैव अ पार्ट्स हैविंग स्टेप टू द बोथ एंड. थर्ड थिंग्स हम तीसरी जो चीज़ है वो हम क्या देख सकते हैं कि इन अ लेफ्ट डायरेक्शन, इन अ लेफ्ट साइड, सो लेफ्ट साइड अ पार्ट्स हैविंग सम थ्रेड्स आर गिवन. ओके सो लेफ्ट साइड को हमने पार्ट्स पे क्या किया हुआ है, थ्रेडिंग किया हुआ है. ओके सो दिस इज अवर अनदर फीचर्स, वी कैन से द डिजाइन एट्रीब्यूट्स. उसके बाद हम देखते हैं राइट साइड पे. ओके ये जो पार्ट्स है उसमें थ्रू होल है, इंटरनल होल है, और जो वी कैन से दैट इंटरनल एक्सियल होल, बट जो होल है वो थ्रू आउट दी कंपोनेंट लेंथ है, थ्रू आउट दी लेंथ है. ओके उसके अलावा हमको सम डायमेंशन दिए हुए हैं. दिस इज 1.5 मीटर और 1.5 इंच में दिया हुआ है यहाँ. सो 1.5 इंच है वो टोटल लेंथ है कंपोनेंट की, और 1 है वो टोटल डायामीटर है, डायामीटर ऑफ कंपोनेंट है, बिकॉज आवर पार्ट इज अ सिलिंड्रिकल पार्ट. ओके सो अब हमारे पास सभी इंफॉर्मेशन है ये पार्ट्स. ओके नाउ हम क्या करेंगे, तो हम इसके लिए कोड असाइन करना है. सो हम पूरा कोड असाइन नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट 5 डिजिट है जिसे हम बोलते हैं फॉर्म कोड, तो हमें इस पार्ट के लिए फॉर्म कोड असाइन करना है. हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स नहीं है अभी. दैट मीन्स हमारे पास जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ओके वो सब इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है. हमारे पास ओनली डिज़ाइन एट्रीब्यूट्स है. सो डिज़ाइन एट्रीब्यूट्स पे हम क्या कर सकते हैं कि हम फॉर्म कोड उसके लिए तैयार कर सकते हैं. तो हमें क्या करना है, फॉर्म कोड हमें तैयार करना है. तो यहाँ आप देख रहे हैं फॉर्म कोड इज़ गिवन 15100. सो इफ जो अब अगर हम इस पार्ट को फॉर्म कोड असाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, 15100. बट ये कैसे मिलेगा वो हमें देखना है. सो लेट अस सी. सो हियर आवर पार्ट्स हैविंग लेंथ इज 1.5 एंड डायमीटर इज 1. Okay, first thing our part is rotational parts. Okay, our part is rotational part, and if we calculate L by D, then we get 1.5. If we consider L by D, L is 1.5, D is 1, so L by D is 1.5. So first digit जो हमें असाइन करना है वो L by D रेशियो हमारे पास है 1.5, and part is a rotational part. So let us see table. So here our part is rotational, so first digit may be a 0, 1, 2, 0 to 5. It is clear. हमारा फर्स्ट डिजिट जो होगा वो 0, 1, 2, 3 और 5 इनमें से ही एक होगा. और अब कौन सा होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, तो L by D रेशियो हमारा है वो क्या है, तो क्या वो है 1.5. सो इट इज़ क्लियरली मेंशन हियर. सो इफ L by D रेशियो is 0.5, it is between 0.5 to 3, then we have to select code 1. So then we have to select, this is our L by D is between 0.5 to 3, so our first code is 1. So here we assign first code is a 1. Now second code, we see the second code. Second code is depends on external shape, is our external shape. Okay, so external shape, second part is our external shape. So if we see our component, so we know that our part is both end step. So here there is a both end step, so our code must be a 4, 5 or 6. So our हमारा जो पार्ट्स है बोथ एंड पे स्टेप है, लेकिन वन एंड देयर इज अ थ्रेड. सो हियर वन एंड देयर इज अ थ्रेड. सो इट इज अ clearly if a both end step and there is a thread, then we have to assign a code 5. Okay, so second digit हमारा क्या होगा, is second digit हमारा होगा 5. Okay, so हमने 2 डिजिट कंप्लीट कर लिए. अब देखेंगे थर्ड डिजिट.
सो थर्ड डिजिट क्या है, तो कि इंटरनल शेप, ओके, इंटरनल शेप, ओके। सो आप देखिए इस पार्ट में इंटरनली क्या है, ग्रूव है, इंटरनली होल आप दिया हुआ है, जो होल है वो थ्रू आउट द लेंथ है और स्मूथ होल है। सो यहाँ हम देखिए तो कि द नो होल, सो ऐसा तो नहीं है हमारे पास में होल नहीं है तो जीरो नहीं आएगा, तो क्या है, स्मूथ और स्टेप टू वन एंड, ओके। दैट मीन्स अवर इंटरनल शेप जो है वो क्या है, स्मूथ है। दैट मीन्स हमको असाइन करना होगा 1, 2 और 3। बट जो इंटरनल होल दिया हुआ है उसमें कहीं भी थ्रेड नहीं है और ग्रूव्स नहीं है। सो क्या है, तो कि इंटरनल जो होल है वो नो शेप एलिमेंट है, तो हमको असाइन करना होगा 1। जो इंटरनल होल है हमारे पास में वो आप देखिए तो होल है लेकिन उसमें कुछ शेप दिया हुआ नहीं है, so that's why we have to select 1. So our third digit must be a 1. Now we consider fourth digit. So fourth digit, plain surface machining. So our part is a cylindrical part, so we know that a cylindrical parts is not required, a plain surface machining is not required in cylindrical parts. If our part is prismatic part, then we require a plain surface machining. Okay, so there is no plain surface machining, then we have to assign 0. There is no plain surface machining, so here we have to apply our fourth digit is 0. Next digit is the digit 5. So auxiliary hole and gear teeth. So if we see our component, there is no holes other than this axial hole. इस एक्सियल होल के अलावा और जो कंपोनेंट है हमारा, उस कंपोनेंट में एक्सियल होल के अलावा और कोई होल दिया हुआ है नहीं। और दूसरी बात कि इस पार्ट में कहीं पर भी गियर टीथ भी नहीं है। सो क्या करना पड़ेगा हमें, तो कि नो ऑक्सिलरी होल, इफ आवर पार्ट हैविंग नो ऑक्सिलरी होल देन वी हैव टू असाइन 0. सो नेक्स्ट कोड वी विल असाइन इज 0. So this 15100, this is our form code. That means this is our OPIDS code for the given part. So ये पार्ट के लिए हमारा OPIDS कोड क्या हुआ 15100. So I hope आपको समझ में आ गया होगा कि OPIDS कोडिंग सिस्टम क्या है. So यहाँ इस एग्जांपल में हमने ओनली जो फर्स्ट 5 डिजिट है वही असाइन किए हैं. ओके, अगर आपको नेक्स्ट 4 डिजिट भी असाइन करने हैं तो उसके लिए आपको इस जो पार्ट्स है उसकी रूट शीट को आपको देखना पड़ेगा और आपको एक दूसरा वाला चार्ट है वो चार्ट भी आपको रिफर करना पड़ेगा. ओके, सो in this lecture we have discussed about OPIDS classification and coding system. Now let us see a quick revision of this lecture. So OPIDS classification and coding system is developed by H. OPIDS इन जर्मनी. ओके, ये जो कोडिंग सिस्टम है उसमें टोटल 9 डिजिट हमको असाइन करने हैं. उस 9 डिजिट में जो फर्स्ट 5 डिजिट है वो फॉर्म कोड कहलाते हैं जो डिज़ाइन एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट करेंगे, और बाकी के 4 डिजिट है जिसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री कोड. ओके, सप्लीमेंट्री कोड है वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करेंगे. अगर फिर भी हमको और कुछ कोड ऐड करने हैं तो हम सेकेंडरी कोड भी यूज़ कर सकते हैं. सेकेंडरी कोड में 4 डिजिट हमको असाइन करना है A, B, C and D, एंड दिस सेकेंडरी कोड जो है वो हमारा प्रोडक्शन शेड्यूल एंड प्रोसेस सीक्वेंस बेस्ड होगा. ओके, सो कोडिंग असाइन करने के लिए हमको कुछ चार्ट रिप्रेजेंट यूज़ करने पड़ेंगे, और बाय यूजिंग दिस चार्ट वी हैव टू असाइन अ कोड टू अ पार्ट, और उसके बाद जिन पार्टों का कोड सेम है उसको हमें एक ग्रुप में रखना है, और जो ग्रुप है उसको हम बोलेंगे पार्ट फैमिली. सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को जो मैंने समझाया है वो सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. ओके, हम उसके बाद जो ग्रुप टेक्नोलॉजी का पार्ट 3 है उसमें हम देखेंगे प्रोडक्शन फ्लो एनालिसिस. ओके, or based on production flow analysis how we have to assign a part family, how we have to develop a part family. Okay, so thank you.